So good morning. Let's start the numericals for BOD. In the last class, I think so we performed some numericals. We executed some numericals based upon COD, if you remember. So let's start doing some of the numericals based upon BOD. So be particular, be sincere, bache, be attentive, because you will be getting a very good percentage of your NSAM or whatsoever exam you'll be going to take in the form of numericals. So BOD, I think so I have showed you this particular formula when we discussed the BOD in detail in the class. That is, BOD at particular time t is equal to ultimate BOD into 1 minus e raised to power minus kt. So I told you how this expression comes from the first order kinetics. I explained you in the class how this expression came from the first order kinetics. That is this one. So K is the BOD rate constant, T is the time in days. So this is a formula where you get this simple BOD estimation. Okay. Or generally, if you talk about BOD, so I repeatedly told in the class BOD is nothing but DO initial minus DO final into dilation factor. If the BOD range is very high, this means if the sample you are taking from the industry is highly contaminated in context of organic content, then you have to dilute the sample so that the sample comes in the range of the testing. So it is ultimately DO initial minus DO final into dilation factor. The dilation factor is like calculated over here also. It is sample bottle volume, and that is usually all over the world it is 300 ml and the sample volume taken. So this is how dilation factor is calculated. So keep this thing in mind, and start doing this particular first numerical. So I want to see the answers in the chat box, and that should be communicated to me personally. That will be your tude performance basically. So determine the 5-day BOD of 15 ml sample that is diluted with dilation water to a total volume, no doubt again 300 ml. When the initial DO is 8 and after 5 DO, the DO has been reduced to 2 milligram per liter. So I am expecting answers in the chat box. Let's see who gives a first answer. I think so. Question is clear to all of you. Okay, Siddhak, right answer. Karan, right answer. Only two. It's a straightforward numerical, nothing more than okay, simple calculation. Priyansh, right answer. I'm expecting more answers. Karanveer, right answer. Only 4. What other students are doing, bache? They need to respond. Pradeep, right answer. Before actually going to second numerical, I want everybody should be involved. Bikram, Bharat, right answer. Piyush, right answer. Done, beta. Now I getting answers very fast.
Parneet, Piyush, Jatin, right answers. Okay, okay. I have data in the chat box. Beta Anadveer is a wrong answer, bache. 11.25 is a not a right answer. Now, if you have problem, you can see the answer. See this, simple. Anadveer. Now see the answer, bache. Simple, beta. Initial DO was 8, final DO that was 2 into dilation factor. Simple. Now you can correct yourself, bacha. Is that okay, everybody? Done. So now I'm expecting the answers from other students who have not responded for the first question. I'm again repeating the lecture. This lecture is being recorded, and moreover, I have a data for the chat box so that I can go for a tweet performance whenever I'm requiring that. So a sample of wastewater has an ultimate BOD of 280 milligram per liter, and 5-day BOD is 240. Now from this data, you just calculate the 10-day BOD of the sample. So you have a wastewater which is having a 5-day BOD is 240 and ultimate BOD is 280. And you remember what is ultimate BOD? I told you when I showed you the graph in the class. It's a combination of carbonaceous and nitrogenous BOD. And when you're talking about carbonaceous BOD only, it's a 5-day BOD. When you have a nitrogen as well as carbon, this BOD is ultimate BOD. This ultimate BOD is no doubt always higher, 280 milligram per liter. And the 5-day BOD is 240. From this data, calculate the 10-day BOD of the sample. I think so. The second expression which I have shown to you, BOD at a particular time t is equal to ultimate BOD is equal into 1 minus e to 1 minus kT. That expression will be used over here. Priyam, Priyam, you are close to the answer, beta, but not right answer. Priyam, but you are close to the answer, but not right answer. Other students, please. Okay, you can try again. 274 is right answer. Piyush, right answer, beta. Sorry. Other students who have not responded for the first numerical, they should put value in the chat box if they want to have a marks for the tute performance. गुरकीरत, आप फर्स्ट numerical कहाँ दे रहे हो मेरे को आप? Anadvi, right answer. Piyush, right answer. Gurukirat, 120, what you are giving me, it's the answer for the first numerical, I think so. Okay. Done. Sorry, Gurukit. Done, beta. Then it's okay, beta. Bikram, right answer. Vansh, right answer. Prince, right answer. Okay. If everybody is getting a right answer, चल ईशान ने सबको बोल दिया 274. See this, simple. So from the data, first of all, you calculate the rate constant, the BOD rate constant. So from the ultimate BOD data, you calculate the rate constant. From the rate constant, you then correspondingly can calculate BOD 10,
दैट इज 274। एंड बाय डिफॉल्ट आंसर देने से पहले जब एग्जाम में भी आए ना, तो आप ये एस्टिमेट कर लेना कि देखो बीओडी जो 10 आएगी अल्टीमेट से तो कम ही आएगी, 5 से ऊपर आएगी, और यहां से आंसर को जल्द लग जाता है आपका हमेशा। इट शुड 10 डेज है जो शुड बी क्लोजर टू अल्टीमेट बीओडी, दैट इज नो डाउट 274। तो मैंने आपको बताया भी था जब ग्राफ दिखाया था कि 5 डे के बाद 80%, 5 डे में 85% आपकी डीओ कंज्यूम हो जाती है, उसके बाद वो सिस्टमेटिकली वेरी करती है, फ्लैट कर्व टाइप, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ओके, नाउ दिस इज वेरी सिंपल न्यूमेरिकल बच्चे। इट्स वेरी सिंपल। द वेस्ट वाटर स्टीम, some of wastewater is coming to treatment plant which is having a BOD of 4000 milligram per liter. Calculate the flow rate of BOD in kg per hour if the wastewater has a flow rate of 5000 मीटर क्यूब पर आवर। सो इंडस्ट्री में जो वेस्ट वाटर आ रहा है उसका फ्लो रेट है 5000 मीटर क्यूब पर आवर। ओके, एंड फ्लो रेट आपका 5000 मीटर के ऊपर आ रहा है, और जो उस वेस्ट वाटर में ऑर्गेनिक कंटेंट की बीओडी आ रही है वो है 4000 मिलीग्राम पर लीटर। नाउ कैन यू कैलकुलेट द फ्लो रेट ऑफ बीओडी इन केजी पर आवर? ओके हरित, प्रियम रॉन्ग आंसर बच्चे। हरित थोड़ा थोड़ा कट करो बेटा अपना आंसर को। लो आपके सामने आंसर। नो आप देखो कहाँ कैलकुलेशन ऐड कर रहे हो बेटा, सबका 200 है, तभी मैंने ये खोला है। 200 केजी पर आ नहीं है क्या, 20,000 आएगा, देखो जरा यूनिट कन्वर्जन कौन करेगा? ईशान, सी द यूनिट कन्वर्जन यार, मैंने केजी पर आर में पूछा हुआ है। यस, तुषार गॉट द राइट आंसर। बेटा हम ये छोटा सा यूनिट कन्वर्जन प्ले एग्जाम में आपको देंगे, तो आप सीधा मल्टीप्लाई करके, नॉट ओनली दिस, वो किसी भी न्यूमेरिकल में आ सकता है। सो इट कैन कम टू एनी न्यूमेरिकल बच्चे। भारत राइट आंसर। Harit right answer, Gurkeet right answer right now. दीपांशु, जतिन, आनंदवीर राइट आंसर यही आ रहे हैं बच्चे बार बार, बाकी भी रिस्पॉन्ड करो बच्चे। आज फिर क्लास में स्ट्रेंथ 32 है बेटे, ठीक है, मैं आपको बोल चुका हूँ बार बार बेटे, जब अटेंडेंस शॉर्ट होगी, विक्रम राइट आंसर, जब अटेंडेंस शॉर्ट होगी देन आई लेट यू नो। आई फॉरगॉट टू मल्टीप्लाई 4000। ओके गुड बेटा, ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहे हैं, मैं बार बार आपको वार्निंग दे रहा हूँ कि अटेंडेंस शॉर्ट है बेटे, जो बच्चों की जो आए हैं वही फाइनल है बच्चे। एंड डोंट प्लीज ब्लेम आफ्टर दैट ऑन अ टीचर कि सर आपने अटेंडेंस क्यों शॉर्ट कर दी।
So that's why in every lecture I'm going to say कितने बच्चे आए हैं, so that record maintains. Priyam, right answer. Now come to this numerical बेटा. अब इस numerical को थोड़ा ध्यान से करना बच्चे सभी. अब सुन लो क्या है numerical में, ध्यान से मैं सुन लो बेटा, फिर स्टार्ट करना. BOD 5 of the wastewater is determined to be 150 milligram per liter at 20 degree centigrade. Okay, the K value is known to be, the K rate, BOD rate constant value known to be 0.23 milli per day, sorry. Okay, ध्यान से, what would be the BOD 8? That is 8-day BOD if the test were run at 15 degree centigrade. अब ये क्या है बच्चे, टेम्परेचर चेंज कर दिया हमने. अब ये क्या है, पहले एक मिनट फंड आपको बता दूं बेटा. देखो हमारे यहाँ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट लगते हैं ना इंडिया में, थापर में लगा हुआ है, तो सब बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है उसमें कि माइक्रोब्स कंज्यूम करते हैं ऑर्गेनिक कंटेंट को, मैंने को बताया था. लेकिन अब वो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट सेम है बच्चे. समर्स में टेम्परेचर 45 पहुंच जाता है, विंटर्स में वही टेम्परेचर 10 डिग्री या 5 डिग्री आ जाता है. तो 40 डिग्री का डिफरेंस अगर आ गया बच्चे, इमेजिन करो कि बैक्टीरियल एक्टिविटी सेम रहेगी नहीं बच्चे. कहाँ बैक्टीरिया 5 डिग्री वर्क कर रहे हैं, ओपन है टैंक आपके, देख लो जाके, वहां पे ओपन टैंक है जहाँ ट्रीटमेंट हो रहा है. तो ओपन टैंक मींस 5 डिग्री से लेस वाटर, एंड व्हेन यू हैव समर्स इट्स 45 डिग्री सेंटीग्रेड. तो दिस अ 40 डिग्री difference in temperature. So once you have 40 degree difference in temperature, how you can imagine the same kinetics which you are using in summer that you can use in winter also? No, you have to vary the kinetics, and this is the question as per a variation of kinetics when you have change in temperature. So for that आपने जो इक्वेशन यूज करनी है, मैंने यहाँ पे हिंट दे रखा है बेटा आपको, ये देखो हिंट दे रखा है आपको, आर इनिस इक्वेशन दे रखी है मैंने यहाँ पे, आपने प्लस 2 में पढ़ी हुई है. आर इनिस इक्वेशन टू टेक इनटू कंसिडरेशन द टेम्परेचर चेंज. Harit, check your answer. 168. Yes, good बेटा, 168 is the right answer. The what थीटा की वैल्यू के लिए आपने हरित, हरित थीटा की वैल्यू क्या लिया आपने बेटा, यहाँ पे मैंने बताई थीटा की वैल्यू अभी. तुषार, हरित 30 थीटा की वैल्यू के लिए आपने, मैंने बताई नहीं अभी तक. आप बताओ जरा तुषार, क्या वैल्यू है आपने थीटा की, लिख के दो उस पे. मान ले ली तुषार, तूने क्या लिया है? हाँ देख, सब पूछ रहे हैं, देख अभी. तुषार तूने क्यों लिए थीटा की वैल्यू? Normally theta varies, okay, so you can take 1.023. So take theta value to be 1.023. और तुषार भाई साहब आपने बताया नहीं थीटा की वैल्यू के लिए, आंसर आपने सही दे दिया. अच्छा ये पीपीटी में था, वेरी गुड. Yes, Harit, you can take one in the exam also, beta. If you're taking one value in exam, just write there, I'm assuming theta value to be 1. We'll correct the answer, we'll give you full marks. तुषार भाई साहब ने पीपीटी में पहले लट्टा मार दिया है, ये नहीं पता कि थीटा क्या है. So are you doing everybody? तुषार थीटा की वैल्यू लिख दी है मैंने बच्चे, 1.023 अभी लिखी है बेटा मैंने यहाँ पे. टेक थीटा वैल्यू
to be 1.023. यस पीपीटी में नहीं है बेटा, वो भाई साहब हमारे तुषार भाई साहब ने बस कॉपी कर दिया, बताया नहीं मेरे को। 168 is right answer. Priyam, you check your answer. 251 is not right answer. Raghav, 163 not right answer. 168 is the right answer, bache. Yes, done. Dipanshu, Ishan, they got the right answer, bache. 167, Anandveer 168. So done. कोई नहीं, चलेगा बेटा. डन है बेटा, करण डन है, गुरकीत डन है, प्रेम डन है. So you can see the answer right now. If you have doubt, you can ask me, bache. Let's wait for 1 or 2 minutes so the other students can go through this and they can note down. So if everybody have done, now see the next Michael beta. The solution is also given, but you can go through the statement first and start doing it. So given that in an untreated domestic wastewater, the BOD5 by COD ratio varies between 0.4 to 0.8. And the BOD5 to TOC, the total organic carbon ratio, varies between 1 to 1.6. Now, if the BOD5 is 2000 milligram per liter at 20 degrees centigrade, from this you calculate the range of COD and TOC for the wastewater treatment plant. So if you have any doubt, you can ask me, bete. In the chat box, you can put your doubts. So accordingly, I can, answer your query. Very simple, bache. Very simple. So what we can do,
once you do these kind of numericals, we can put the tute sheet on LMS so that you can practice more regarding these numericals. Done. Another wheel. Good. यस तुषार, अगर लास्ट क्वेश्चन में एक लेंगे तो आंसर वेरी करेगा, बट जनरली मैं बोल चुका हूं कि अगर आप एग्जाम में लिखते हो ऊपर न्यूमेरिकल शुरू करने से पहले कि आई एम अज्यूमिंग थीटा टू बी 1, तो हम उसको करेक्ट करेंगे, बिकॉज समटाइम्स लाइक यू आर नॉट हैविंग लाइक दैट गोइंग टू हैव क्रैम द थिंग्स कि थीटा कितना है, तो अगर नहीं पता तो इंजीनियर्स को कभी ये नहीं होता कि वही रट्टा मार के वही लिखना है, तो वो जो भी अज्यूम करते हैं, लेकिन वो अजम्पशन सही होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, ठीक है, वैसे मोस्टली जब हम डिजाइन के न्यूमेरिकल देते हैं, मैकेनिकल को जब करते हैं, तो उनके पास पूरी बुक्स अवेलेबल होती हैं जो पेपर में लेके जाते हैं, ठीक है, तो हम उसको ठीक करेंगे एग्जाम में। So everybody have done it? Done. So I'm stopping sharing so that the other numericals we can do. Just wait for 1 minute. Okay, now the screen is visible to all of you. Yes, the screen is visible to all of you. Done. Done. Now see this. See this beta. Now you just go through this thing, because now we want to start few numericals, 1 or 2 numericals on ASP also. You know ASP na? Activated sludge process, which we have covered in detail in the class. So active sludge में क्या होता है, मैं फिर डिफाइन करता हूँ, फिर आगे मूव कर जाऊंगा बच्चा आपके साथ। होता क्या उसमें कि आपके एरेशन टैंक है और सेटलिंग टैंक है। एरेशन टैंक में आप एरेशन करते हो, माइक्रोब्स को ग्रो करवाते हो, स्लज बन जाती है, उसको एक्टिव स्लज बोलते हैं, और ये एक्टिव स्लज माइक्रोब्स की, बैक्टीरिया की ऑर्गेनिक कंटेंट को कंज्यूम करती है। बच्चे देखो, कंज्यूम ऑर्गेनिक कंटेंट कमिंग फ्रॉम द प्राइमरी टैंक। ओके, तो जितनी बेटर स्लज बनेगी हमारे पास, उतना बेटर आपका रिमूवल होगा ऑर्गेनिक्स का। तो उसको हम डिफाइन करते हैं एक टर्म के साथ जो यहाँ पे लिखी हुई है आपके सामने। जस्ट गो थ्रू इट, देन कम टू द फार्मूला। ओके, द स्लज वॉल्यूम इंडेक्स। ओके, द स्लज वॉल्यूम इंडेक्स। Sludge volume index means what? See this, you can read through. It's also known as SVI. Describes the how well the sludge from the aeration tank settles and compacts. तो जितनी ज्यादा डेंस ग्रोथ होगी, जितनी ज्यादा अच्छी ग्रोथ होगी, उतनी सेटलिंग होगी बच्चे। अगर माइक्रोब स्कैटर्ड ग्रो कर रहे हैं, उनको फूड नहीं मिल रहा, ग्रोथ बहुत स्कैटर्ड हो रही है, कम हो रही है, तो स्लज वॉल्यूम इंडेक्स कम हो जाएगा। ओके, सो दैट्स व्हाई टू सी व्हाई। अच्छा, मैं आपको बोल रहा हूँ बार बार, हमेशा आपको बुलाया जब मैंने एसवी करवाया, आपको कैसे पता चलेगा कि माइक्रो वहां पे अंदर लाइव है डेड है?
ठीक है, और अगर लाइव होंगे तभी ऑर्गेनिक कंटेंट कंज्यूम करेंगे, जो मैं बता चुका हूँ। तो ऑर्गेनिक कंटेंट कंज्यूम होगा, दैट मींस योर वेस्ट इज नाउ, वेस्ट वाटर इज गेटिंग रिड ऑफ दिस काइंड ऑफ कंटेमिनेंट्स। तो उसको देखने का पर्पस क्या होता है कि विथ time, not after 2 days, 3 days, 5 days per week, I want to take a sample from the aeration tank. सैंपल लेके उसको मैं लैब में आ जाऊंगा और मैं देखता हूँ कि वो सेटल कैसे कर रहा है, किसको क्या सेटल कर रहा है, स्लज कौन सी, एक्टिव स्लज कौन सी, माइक्रोब्स की। तो अगर वो सेटलिंग बहुत अच्छी हो रही है, आगे जो बताने वाले हैं आपको, तो दिस मीन्स माइक्रोब्स बहुत अच्छे ग्रो कर रहे हैं इसके बीच में। ओके, स्लो स्लज वॉल्यूम इंडेक्स, द SVI, describes how well the sludge settles and compacts. In order to calculate SVI, you will need two numbers. Okay, क्या क्या चाहिए वो, the first number क्या है वो, first number comes from 30, दो नंबर चाहिए बेटा, ये रहा, ये नंबर चाहिए दो, क्या है, settled sludge volume and suspended solid concentration क्या है, उसके अकॉर्डिंग निकालेंगे SVI. See this, पहला नंबर आएगा बेटा, comes from the 30-minute settleability test. अब करना क्या है, 1 लीटर सैंपल उठाना है, कहां से भाई, अभी बताया एरिएशन टैंक से, लिखे ना 1 लीटर ऑफ सैंपल, उसको बोलते हैं मिक्स लिक्विड सैंपल फ्रॉम द एरिएशन टैंक इज poured into a container called a settlometer, हमारे पास लैब में पड़ा होता है. नाउ वेट फॉर 30 minutes, द स्लज इज अलाउड टू सेटल फॉर 30 minutes. जो वॉल्यूम सेटल हो गया स्लज का, उसको मेजर कर लेते हैं, कैसे, इन ml पर लीटर, क्योंकि जो आपका सेटलोमीटर होता है एक तरह का मेजरिंग सिलेंडर होता है, तो उसमें पता लगे कितने ml की स्लज बन गई, तो जितनी थिक स्लज बनेगी उतने ml ज्यादा बढ़ते जाएंगे. हमने लिया 1 लीटर, तो ये हो गया पहला पैरामीटर ml पर लीटर. दिस मींस हाउ मच स्लज इज बीइंग सेटल्ड पर लीटर ऑफ द वॉल्यूम टेकन, मिक्स लिक्विड वॉल्यूम टेकन. ओके, ना अदर नंबर जो अभी निकालने वाले हैं, अदर नंबर यूज इन इज कम्स फ्रॉम द MLSS. MLSS मैं बता चुका हूं क्लास में, मिक्स्ड लिक्विड सस्पेंडेड सॉलिड्स. रिपीट कर रहा हूं, मिक्स्ड लिक्विड सस्पेंडेड सॉलिड्स. ओके, ये क्या है, बेसिकली आपके माइक्रोब्स हैं. कैसे, इट सिंपली डिटरमिन्स द सस्पेंडेड सॉल्ट कंसंट्रेशन ऑफ द सैंपल इन द एरेशन टैंक इन मिलीग्राम पर लीटर. ओके, ये भी डाटा आपके पास आ जाएगा. तो SBI कैसे निकालना बेटे, SBI इज हमेशा ml per gram. SBI is in ml per gram. So basically it is settled sludge volume. अभी निकाला, ये देखो, ml per liter divided by suspended salt concentration milligram per liter. See this, milligram per liter, that is salt concentration. इसको कन्वर्ट कर दिया हमने ग्राम को, सॉरी मिलीग्राम को ग्राम के वैल्यू कर दिया. दिस कम योर SBI ml per gram. All of you agree? And from SBI you can calculate sludge density index. अब ये डेंसिटी क्या बताएगी, कितनी कंपैक्ट है वो. तो नॉर्मली फॉर्मूला इज पर्लनेस के बीच में SDI is 100 by SBI. Once you have calculated SBI, sludge volume index, from this you can calculate sludge density index, that is 100 by SBI. और उसके उल्टा हो जाएगा जो मैंने बताया, SDI उल्टा हो गया बेटा, उल्टा हो गया ना. और देखो, ग्राम पर लीटर ऑफ स्लज बाय स्लज वॉल्यूम, बिकॉज आपका वो डिवाइड हो गया, और 100 का फैक्टर वहां पे आ गया बच्चे. ठीक है जी, इज दैट ओके एवरीबॉडी? इफ दैट्स ओके देन यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस न्यूमेरिकल. बेटा आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू. पढ़ो इसको एक बार, मैं इसको गो थ्रू होता हूं आपको. So this is what बेटा सब कुछ गिवन है बेटे. The MLSS, the mixed liquid suspended solid concentration in the aeration tank is given, that is this one. And the sludge volume after 30 minutes of settling is the sludge volume after 30 minutes of settling in 1000 ml graduated cylinder is this one. From this data calculate SBI, SDI and SS concentration. SS concentration का फॉर्मूला बताता हूँ बाद में बेटा, बट ये है सिंपल SBI जो अभी बता चुका हूँ आपको मैं.
तो SBI इज बस कैसे बेटा 215 yes or not see the formula if you have doubt you can ask me which is simple formula 215 by that is 215 ml per liter by 2500 that is MLSS mixed liquid suspended solids. So once you multiply by 1000 to convert it to gram, you will get this answer. This is SVI. This is SVI. That is sludge volume index for that particular system. And accordingly, you can calculate SDI, that is 100 by SVI. And no doubt its units are gram per ml. And the suspended solids are being calculated using this formula. Times 6 by SVI. So you can get this answer. I hope you might have understood. If you have a doubt, you can ask me, bache. Simple calculations, beta. You just remember all these kind of formulas. Okay, Anandveer, why you take 10 to 6 बेटा ये बेटा ये फार्मूले में कन्वर्जन है बेटा हम इसको इसकी डिटेल में नहीं जा रहे हैं अभी ठीक है जस्ट रिमेंबर इट मैं आपको बता दूंगा बाद में इसके बारे में बेटा बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू डिटेल ऑफ डिजाइनिंग ऑफ दिस काइंड ऑफ थिंग्स ओके सो ये कन्वर्जन्स हैं बेटा जब यूज करते हैं if that is done the last part is like this only this is the last numerical बच्चे of water pollution ठीक है जी पढ़ लो इसको एक बार ना गेट बैक टू मी एंड आउट An aeration tank is operating with mixed liquid suspended solid concentration of 1800 milligram per liter. After settling, same test, okay, 30 minutes, 1 liter cylinder, all kind of things, your volume comes out to 450 ml. Now, from this data, what is the SVI? You know, very simple, 450 by 1800 into 1000, that is 250 ml per gram, okay? सो जनरली अब मैं आपको बता दूं लास्ट में कि जब इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं तो द आइडल एसबीआई की तरह होना चाहिए जहां पे आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है और आपकी डिग्रेडेशन बहुत अच्छी हो रही है दैट इज दिस 1880 टू 150 मिलीग्राम पर लीटर अब आपकी आई 250 इसका मीनिंग क्या है द स्लज डज नॉट सेटल सेटिस्फैक्टरली इन द एरिएशन टैंक क्यों स्लज वॉल्यूम इंडेक्स बहुत ज्यादा बढ़ गया सेटल नहीं करेगी वो निकल जाएगी ओके No worries, beta, no worries. So joining back. So are you getting this now? This is simple. How you're going to get, but you need to have value. So your ideal SPI should be between 80 to 150 milligram per liter. Sorry, ml per gram. Should not be less than 80. Less than 80 होगी उसका क्या मीनिंग है बेटा ग्रोथ नहीं हो रही अगर आपके पास 250 से ज्यादा आ रही है तो उसके अकॉर्डिंग वी आर नॉट गेटिंग सेटिस्फैक्टरी yes okay so done beta I'm done with the numericals you have any doubt you can ask me and all these numericals videos are available on LMS if still you have any doubt you can ask me beta I'm allowing you to unmute yourself so last 3 or 4 5 minutes एक बार बेटा ये वीडियो भी मैं ट्राई करता हूँ वीकेंड बहुत आई वाज सो टोटली ऑक्यूपाइड सो आई कुडंट एबल टू डू दैट सर या तो जो लास्ट वाले क्वेश्चन में एसवीआई आइडियल रेंज थी वो हमें याद करनी होगी ना 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 वो हमने इससे आपको बताने के लिए बच्चे ठीक है सर सर वो रेंज आती कहाँ से है रेंज
हाँ सर, मतलब वो रेंज मतलब आती कहाँ से, वो पता क्या चले कि वही रेंज है हमारी। बेटा वो रेंज इसलिए है कि बेसिकली हम इसको गवर्न करते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं जिसके लिए कैसे हमारे पास ये डिफरेंट रेंज पे काम करते हैं जब स्टैंडर्डाइज करते हैं अपने चैम्बर्स को, कि हमारे पास इनलेट लोड कितना है, एग्जिट लोड कितना चाहिए। और इनलेट और एग्जिट लोड मींस इनलेट में आपका ऑर्गेनिक कंटेंट कितना आ रहा है और एग्जिट में कितना खत्म हो गया, उस दोनों के बीच में अंदर जो सिस्टम में हो रहा है, तो हमें कितना वॉल्यूम स्लज का कितना वॉल्यूम मेंटेन करना है उसके बीच में और कितना रिसाइकिल करना है। तो ये वहां से कैलकुलेट करते हैं सारा विद हिट एंड ट्रायल स्टैंडर्डाइज करने के लिए उसको। ठीक है ना, वो हमें ठीक एक है बार, सर। क्योंकि जब ये लैब लैब स्केल पे उसको आप ऑप्टिमाइज करोगे, डिजाइन करोगे ना, ठीक है। जैसे आप मैकेनिकल इंजीनियर हो बच्चे, आप मशीन डिजाइन करते हो तो आप उसमें बोलते हो कि दिस आरपीएम इज द मैक्सिमम लिमिट फॉर दिस मशीन। कैसे डिसाइड करते हो आप, कि आप कह रहे हो कि सर 10,000 20,000 आरपीएम जो है रेवोल्यूशन पर मिनट मैक्सिमम लिमिट है इसकी। उसके बाद अगर करोगे, इसके बाद आरपीएम चलाओगे तो इसमें ये लॉसेज आ जाएंगे। तो आपने वो 10,000 या 20,000 आरपीएम कैसे स्टैंडर्डाइज की, बाय डूइंग द रूटीन लैब डिजाइन एक्सपेरिमेंट्स। यस सर। वो हम यहाँ पे हम भी करते हैं पूरा डिजाइन एक्सपेरिमेंट्स में, कोई छोटी सी गलती पूरा ब्लंडर हो जाएगा आपका सिस्टम का। और ब्लंडर होना मीन्स इतने बड़े सिस्टम को रन करना और इतना लाखों रुपए खर्च करना फॉर नथिंग। ओके। यस सर, ठीक है सर। सर यस। सर जो हमने एक न्यूमेरिकल में हमने जो थीटा की वैल्यू ली थी, आपने बोला था ना 1 भी ले सकते हैं, तो कोई स्पेसिफिक रेंज है क्या उसकी थीटा नहीं 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 बेटा, कितने? वो रेंज है। अगर आरएनएस देखोगे तो उसमें आरएनएस में वो रेंज है, उसकी 1.023 से समथिंग वेरी करती है थोड़ी वैल्यू। फाइन। ओके तो हम उस रेंज के अकॉर्डिंग दे सकते हैं। तो 1.023 कैन बी अप्रोक्सीमेटली टेकन टू 1, यस और नॉट। ठीक है सर। दैट यू कैन ऑलवेज टेक बाय हाँ, टेकिंग सर्टेन assumptions। ठीक है सर। सर लेकिन वो लिखना पड़ेगा ना पेपर में कि Yes, हमने 1 yes, लेके कर yes, yes. That's why in for every paper when we are giving you some numericals on the top of your this particular, not numericals but questions, I will write that assume anything you want to have, but by stating that assumption. ओके सर। Okay.